Good morning, your student. Good morning, Premo, Sasutos, Nitesh, Sravani, Subham, Sipun, Papun, Lapkus. Very good morning to all of you. Good morning, Elena. आज बहुत देरी ହେଇଗଲା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ around 17 minute late ହେଇଗଲାଣି. Sorry for this. So let's have a look what we have read till now. कौन कौन ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛେ ଦେଖିନେବା ଥରେ. This is your aldehyde and ketone. In aldehyde, the functional group is CO and RCHO is also RCHO is the aldehyde, whereas RCOR is known as your ketone. Next, aldehyde has the prefix suffix al and prefix formal. Ketone has suffix one, prefix oxo. Further, from alcohol by method of oxidation we can prepare from primary alcohol give rise to aldehyde and secondary alcohol give rise to ketone. Then by catalytic dehydrogenation also using copper at 300 degrees Celsius, primary alcohol and secondary alcohol gives aldehyde and ketone respectively. Further, by dry distillation of calcium salt we get aldehyde or ketone accordingly. Then by means of Rosen-Mond reduction reaction we can get aldehyde. Here the catalyst is palladium barium sulfate over hot xylene whenever acid chloride is reduced. Further, this was a homework of last class. Next, preparation of ketone from acid chloride. We can prepare ketone from acid chloride by reacting with cadmium, dialkyl cadmium with acid chloride. From alkyne can be hydrolyzed in presence of HgSO4 and dilute H2SO4 to produce corresponding aldehyde. And the homework for last class is like this. Last class रो इटा थिला homework. तो आंसर कौन हबो? What is the answer of first question? प्रथम क्वेश्चन रा आंसर कौन हबो? What is the answer of first question? प्रथम क्वेश्चन रा आंसर कौन हबो पिला माने? Let me know what is the answer of first question. प्रथम क्वेश्चन रा आंसर कौन हबो इठी? Then second, third homework थिला इटा. ब्यूटानल लव कुछ कहले ब्यूटानल. श्रावणी कहले प्रोपानल. सो देखि नबा आंसर कौन हबो. एटी तीनटा कार्बन रहिछि पिला माने. इफ यू सी 3 कार्बन्स आर देयर फॉर द सॉरी 4टा कार्बन रहिछि. 4टा कार्बन रहिछि माने ऑब्वियसली वी विल गेट द अल्कोहल. अल्कोहल टा ई पाखरे आसीबो आ तुमर एठी CH लागिवो. ओके. श्रावणी कहले ब्यूटानल. So ultimately the alcohol enol will be CH3 bond CH2 bond COH double bond CH2 which can be tautomerized to get
aldehyde, and the aldehyde will be, sorry, this is CH3, CH2, C double bond O, CH3. So butanaldehyde is wrong, both Kusa and Straboni. Did you understand why it is not butanaldehyde? 2 butanal is wrong, Premus. ଏମିତି ତ କିଛି compound ନାହିଁ 2 butanal. Very good. Butane 2ONE is the compound. Did you understand? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? Without doing mechanism, without doing reaction, you cannot confirm which one is the reaction. Butane 2ONE is the name of the compound. Next, question number 2. What is the compounds? What is the compound in this case? ପିଲାମାନେ OH ସେଇଠି ଲାଗିବ ଯୋଉଠି ତୁମର less number of carbon atom ଥିବ. OH will be attached at that site where less number of carbon atom is there if it is an unsymmetrical alkyne. Unsymmetrical alkyne ହେଇଥିଲେ ତୁମର ସେଇ ପାଖରେ OH ଲାଗିବ ଯୋଉ ପାଖରେ ତୁମର less number of carbon ଥିବ. Remember, this is the formula. जोठी कम नंबर कार्बन थिबो अनसिमेट्रिकल अल्केन केस रे एठी तुमरो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थिला सेति पई ओएच लागिला. दिस इज योर मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल. सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द compound or coming negative part of the acid or anything, negative part of the coming compound will be attached at the carbon containing less number of hydrogen. एटी जदि हमें कंसीडर करवा दिस इज ए सिमेट्रिकल अल्काइन. सो एटी जेकोसी जगह OH लगी परिबो. नो, इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल अल्किन आल्सो, इट इज अनसिमेट्रिकल अल्किन. किंतु एटी तुमको चूज करिया पड़ियो कोपट कार्बन रे तुमरो अधिका सब्स्टिट्यूशन अछि, कोपट कार्बन रे अधिका सब्स्टिट्यूशन अछि. ओके, सो सब्स्टिट्यूशन अधिका जदि हम देखिए एपट साइड कार्बन रे अधिका सब्स्टिट्यूशन अच्छी. ठीक अच्छे, तो ये लेफ्ट साइड रे ही तुम कौन हम अटैच हम OH, राइट साइड रे अटैच कले हम ना. सो दिस विल बी C2H5 C डबल बॉन्ड O CH CH3 further, sorry, COH, this is COH and this is double bond. Further, it can tautomerize to produce C2H5 CO CH2 CH3. So what is the name of this compound? ए कंपाउंड ना कौन हम पिला मैंने कह. जो मैंने भी आज नुआ क्लास करुच, न्यूली जॉइन करच, I have a request from my side. Please view the last 2 videos. I will provide you the link after completion of this class. Let me produce also. Let me share you the link also. Pentane 2ONE. Premus कहले pentane 2ONE, प्रतिभा pentane 2ONE, लवकुश pentane 3ONE. So what is the name of this compound? It is very essential. बहुत जन ठीक आंसर भूल आंसर कहउछन्दी. So what will be the name further?
pentane 3ONE. Elena has told pentane 3ONE. Very good, Elena. pentane 3ONE already କୁଶ ବି କହିଥିଲେ. pentane 2ONE left to right numbering. pentane 2ONE ହବ ନାହିଁ, pentane 3ONE ହବ ହିଁ, pentane 3ONE ହିଁ ହବ ପ୍ରତିଭା. फ्रॉम which साइड तुम जेपट साइड रू भी नंबरिंग करना कहीं पेंटेन 3ON ही हम. लेफ्ट साइड रे दीटा कार्बन अच्छी गोटे कार्बन नहीं, तो यहाँ देखिए बुझी जाओ 1 2 3 4 5. सो 3 पोजिशन रे ON अच्छी. लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर बा राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर, देयर विल बी पेंटेन 3ON, कारण लेफ्ट साइड रे दीटा कार्बन अच्छी. ठीक अच्छे प्रतिभा, इज इट क्लियर? ओके सर. नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या को आम ऑक्सीडाइज कले सॉरी क्या को हाइड्रोलाइज कले व्हिच अल्काइन विल प्रोड्यूस योर ब्यूटेन 2ON. दिस इज ब्यूटेन 2ON. केमती आम नंबरिंग करवा 1 2 3 4 ब्यूटेन 2ON. पिला माने जोठी भी नंबरिंग तुम्हें बुझी न पारुच, जोठी भी तुम्हारा डाउट लगुच जे सार काले भूल पढ़ी दौरान, देन प्लीज रेज योर वॉइस. कारण मनीष मैंने भूल हवा, मोर भी भूल हवा स्वाभाविक कथा. आज बहुत खुशी लगुच, आज 13 जन पिला जॉइन कर क्लास रे. 13 स्टूडेंट्स हैव जॉइन टुडेज क्लास. बहुत खुशी लगुच. एभलिया जदि रेगुलर पिला रहिबे डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड सक्सेस. तुम्हारा मॉर्निंग हैबिट हो उठिबार, एंड अनदर थिंग यू विल गेट ए गुड रिजल्ट इन योर बोर्ड एग्जाम. कारण अभ्यास हो मॉर्निंग रे उठिबार. वन्स अभ्यास होगला माने इट विल मेक ए गुड हैबिट फॉर यू. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को पिला माने ब्यूटेन 2ON हमें को अल्काइन को हमें हाइड्रोलिसिस करने द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 and HgSO4 mercury sulfide we will get mercury sulfide mercuric sulfate we will get butane 2ON. ब्यूटाइन हम कि सार लेट मी डू देखा ये को कले ही जाना पड़ो. यू कैन से which compound it will be. ब्यूटाइन ब्यूटिलिन ब्यूटाइन और ब्यूटिलिन लवकुश कहले. एक्चुअली मोर गोटे सका पानी पीवार अभ्यास अच्छी. पानी न पीले जमा गला खोलेनि. माने मॉर्निंग रे अराउंड मु 2 to 3 लीटर पानी पिए, से पानी पिए. ब्यूटाइन प्रेमोस कहले. सो लेट्स डू द आंसर. ऑलरेडी रेस्पॉन्स आसीगला. सो ये क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करवा CH3 COH हम ये डबल बॉन्ड ये आसीज. डबल बॉन्ड एइदर जेकोनी साइड रू भी आसीपारे. ठीक अच्छे डबल बॉन्ड दीटा साइड रू आम नहीं पार, दीटा साइड रू होची बोली कि भाभी नवा. तो ये क्वेश्चन टा क्वाइट टफ. यहाँ आमर CH3 में इतना इम्पोर्टेंट नहीं. जदि आम डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड रे पुट करुचे दिस विल बी. जदि डबल बॉन्ड राइट साइड रे पुट करुचे इट विल बी अनदर थिंग. CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH3. ओके यहाँ हम राइट साइड रे जदि आम डबल बॉन्ड पुट करवा. सो आमर क्वेश्चन आसचे जे डबल बॉन्ड पुट कले को पट साइड रे एक्जाक्टली तुमार रिएक्टेंट रहिबो कोटा एक्जाक्ट रिएक्टेंट. सो इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH माने CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH C तो रहिबनी C2H5
CH2 triple bond CH5 C2H5 हबो reactant ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରେ further you will get CH3 C triple bond CH तो हबनी CH3 sorry this will be CH3 ठीक अच्छे सो जदि आम देखा कौ पट साइड आंसर हम जदि आम कहवा जे एपटे आल्कोहल हम हाँ एपटे आल्कोहल अटैच हम एपटे भी तुम OH इटा सिमेट्रिकल alkyne हम दिस इज योर unsymmetrical alkyne so preferentially both of them will be answer but 1-YNE but 2-YNE both will give rise to butane 2ONE but 1YN हो बा butane 2YNE हो both will produce the compound that is your butane 2ONE so the answer will be two types of answer okay it is dita answer asijibo so this is your butane 1YNE 1 butane and this is 2 butane रेदर हम बेटर हम आम जो मन रखा कौन 1 ब्यूटाइन बोलिकी कारण 1 ब्यूटाइन लेस नंबर ऑफ जगह रोचे सो ये दीटा पॉसिबिलिटी आसो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर टू गेट द कंपाउंड 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन आउ थे कही रखी पे जो मैंने भी लास्ट क्लास करना से मैंने लास्ट क्लास करनी देखनी वीडियो लास्ट 3टा वीडियो केमती रिलेट होगी रही जस्ट तार प्लेबैक स्पीड बढ़े दियो जदि तुम्हें देखीदेच से सेक्शन जद्वारा प्लेबैक स्पीड रे करदेले कौन हम ना तुम्हें सब क्वेश्चन को कवर कर पारियो ठीक अच्छे जो मैंने भी लास्ट क्लास गुड़ाक देखना फॉर देम आ जो मैंने लास्ट क्लास देखियो देयर इज नो इश्यू देन व्हाट इज द नेक्स्ट कंपाउंड तुम्हारा कार्बोनिल क्लोराइड जेतेबेले रिएक्ट करछि डाई अल्काइल कैडमियम सहित व्हाट विल बी द प्रोडक्ट carbonyl chloride when react with dialkyl cadmium what is the product एटी 2 moles of रहिबो what is the product further बहुत खुशी लगिला 14 जन पिला लाइव अच्छे माने 14 जन पिला सीरीयस अच्छे अबाउट देयर स्टडी वेरी गुड बहुत बढ़िया लगिला तब सेशन को शेयर कर इफ यू लाइक दिस क्लास देन प्लीज पुट ए लाइक एंड इफ यू वांट टू गेट अपडेटेड विथ दिस सेक्शन देन प्लीज सब्सक्राइब बट इफ यू डोंट वांट देन यू मे नॉट अच्छा आंसर आसीगला ब्यूटेन 2ONE मिथाइल इथाइल कीटोन ब्यूटेन 2ONE प्रेमुस कहले श्रावणी कहले डाई इथाइल कीटोन लवकुश कहले इथाइल मिथाइल कीटोन तो आंसर देखि नवा कौन आसीबो द आंसर विल बी CH3CO C2H5 दिस विल बी 2 molecules of ketone plus CdCl2 कैडमियम डाइक्लोराइड एटा रोजेनमॉन्ड परर रिएक्शन रोजेनमॉन्ड रिडक्शन रिएक्शन नुह किंतु एटा so two molecules of this compound this will be named as 1 2 3 4 so butane 2ONE butane 2ONE Premus has given right answer further ethyl methyl ketone Lavakush also has given right answer sir 2 number ta tike repeat कहि देबे please okay sure मु कहि देबी and Shravani has given diethyl ketone wrong है जिवो Shravani this will give rise to your CH3COC2H5 that is butane 2ONE the compound will be butane 2ONE or ethyl methyl ketone so on the request of Pratibha the question is C2H5 bond C triple bond C CH3 ताकु जेतेबेले आमे हाइड्रोलिसिस करिबा यूजिंग HgSO4 we will get alkene तो आल्किन जेकोनस जगह हो पार OH एठी अटैच कर एठी अटैच कर जोटी भी अटैच कले सेम आसीबो प्रोडक्ट ठीक अच्छे जोटी भी अटैच कले सेम आसीबो सो OH तुम 2 नंबर पोजिशन रे अटैच कला 2 नंबर पोजिशन रे अटैक करिया परे फर्दर 2 नंबर पोजिशन रे अटैक करिया जो 2 नंबर पोजिशन रे तुम कीटोन देला ठीक अच्छे
सॉरी इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल आल्किन भूल हो गला इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल आल्किन C2H5 माने या भांगिले आम दीटा पाइबा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 इट इज अनसिमेट्रिकल आल्किन अनसिमेट्रिकल आल्किन केस रे आमर कहूतिले जे जो पट कार्बन रे तुमर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थिबो जो पट कार्बन रे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थिबो सेठी तुमर सब्स्टिट्यूशन हम OH किंतु ये आम जो देखा दीपट कार्बन रे सफ्ट माने कार्बन रे तुमर हाइड्रोजन संख्या सेम रही यही कार्बन रे भी हाइड्रोजन संख्या सेम रही तो आम एक्जाक्टली कहीपरानी कौटी लगे से आम सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट मार्कोनिक ऑफ एडिशन रो नेक्स्ट प्रोसेस थिला सब्स्टिट्यूशन सो मोर सब्स्टिट्यूशन कौटी देखा मोर सब्स्टिट्यूशन तुमर एपट सेक्शन रही यू विल सी दैट डाइथाइल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट तुम CH2 एपटे दीटा ग्रुप अच्छी एपटे गोटे ग्रुप अच्छी तो सब्स्टिट्यूशन जेहेतु लेफ्ट साइड रे अधिका अच्छी प्रथम कथा द्वितीय कथा सब्स्टिट्यूशन लेफ्ट साइड रे अधिका थिबारु एठी प्लस आई इफेक्ट आसिला जाद्वारा तुमर 3 नंबर कार्बन रे कौन हम न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH माइनस विल अटैक वेरी गुड मैनर C डबल बॉन्ड OH हम कि सार ना आंसर एंड OH भितर सिंगल बॉन्ड रहिबो कि OH रे ओनली सिंगल बॉन्ड रहिबो OH रे डबल बॉन्ड रही परिबो नाही मु काल लास्ट क्लास मेकानिज्म बुझीतिली O ट्रिपल बॉन्ड H हे जिवो ठीक अछि देयर विल बी O ट्रिपल बॉन्ड H ओके आजिर कॉन्सेप्ट पढ़िबा अराउंड 5 जन पिला पळेलेनी आजिर क्लास रु माइट से माने बोधे विरक्ति हो जाइथिबे क्लास बुझी पार नथिबे नेक्स्ट 5 6 5 6 7 8 9 10 ये क्वेश्चन गुड़ाक आंसर कह फटाफट कहले आम पुणी आउथरे आजिर क्लास पढ़ा कारण बहुत गुड़े टाइम होगा किंतु आम लास्ट क्लास होमवर्क ही सॉल्व करचे तो मु आरंभ दे देइथिली क्वेश्चन से तुमर काम है क्वेश्चन आसला मात्रे ताको केवल आंसर कहब तुम्हें जहाँ जमी सॉल्व करथिबो सो टाइम वेस्ट कले बहुत टाइम पड़ेबो पिला माने फटाफट आंसर कहीदेले जद्वारा आमर बहुत टाइम रे कम टाइम रे आम अधिक क्वेश्चन कर से मु लास्ट क्लास ही होमवर्क दे देइथिली सो प्लीज एडहियर टू इट दैट यू शुड डू द होमवर्क बिफोर द क्लास जदि आज स्टार्ट होनी 5टा 10-15 होगा सार टी अलसुआ होगले उठबारे लेट कले ताले आमे 10 मिनिट यूटिलाइज करदे से 10 मिनिट रे बसिकी जहाँ जहाँ क्लास रहा आम प्रैक्टिस करदे बा होमवर्क आज जहाँ दिखाई आम थ्रू आउट द डे प्रैक्टिस करदे जहाँद्वारा आमको अधिक टाइम मिल सॉल्व कर ठीक अच्छे एनालाइज हो पार आईटी मु एनालाइज करी तुम्हें आग आंसर कहतापर एनालाइज करी इट मे टाइम टेक मच मोर टाइम सो यही क्वेश्चन आंसर मु कर नौची आज मु आउ तुम मानक चांस दौनी इथानोइल क्लोराइड आंसर लवकुश कही सारे इथानोइल क्लोराइड द आंसर विल बी CH3 CH2 COCl CH3 CH2 COCl that is propanoil chloride answer will be propanoil chloride okay लवकुश आंसर हवा propanoil chloride ठीक अच्छे प्रोपानोइल क्लोराइड हवा आंसर एटी तुम आसो दिस इज योर पेंटेन 2ONe दिस इज योर पेंटेन 2ONe 5टा कार्बन थी जो 2 3 इट इज ए सिमेट्रिकल कीटोन सो पेंटेन 2ONe फर्दर या रोजेनमॉन्ड रिडक्शन रिएक्शन कले C3H7 CHO प्लस HCl समस्ते करके आसो नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट लगे पे तुमको इंटरेस्ट लगे मत भी इंटरेस्ट लगे अदरवाइज आमर बहुत गुड़े टाइम पलैब वेरी गुड श्रावणी हैज गिवन द राइट आंसर दैट इज योर C3H7 CHO that is butanaldehyde or butanal and the starting material is butanoil chloride. This is your starting material that is butanoil chloride. It is your Rosenmond reduction reaction तापर आछी तुमरो ड्राई डिस्टिलेशन रिएक्शन CH3COH ताहले aldehyde हिच माने निहाती अभाव एठी गोटे कैल्शियम फॉर्मेट अछि you will find a calcium format here as well as your CH3COCA so CH3COO
CH3CO calcium acetate plus a calcium formate. Very good Shravani. देखो क्या Shravani कहते sincere. She has done all the questions. Although she is in right now, she will appear the exam at 2023, but she is very serious. But what about other students? Please be serious towards it, so that if you are more serious you might get a good result. ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। Calcium acetate, calcium formate, very good Lavakusa. So the answer is right, that is calcium acetate and calcium formate will be produced further. Okay, further this is your benzyl alcohol. Benzyl alcohol को oxidation कले we will get benzaldehyde C6H5CHO और benzaldehyde. सो तुम्हें मैंने आंसर कही चलो जो मैंने भी जो क्वेश्चन गुड़ा कर देच आंसर कही चलो, सो दैट ये देखी हम सांगे सांगे फर्दर तुमर ये कहुई डिहाइड्रोजिनेशन यूजिंग कॉपर कैटलिस्ट. सो इट विल बी द आंसर विल बी CH3CH2OH. CH3CH2OH, that is your ethanol. Ethanol will be answer. Ethanol को हमें ऑक्सीडेशन इथानल को जिते आम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करवा वी विल गेट एसिटाल्डिहाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जे जो क्वेश्चन आंसर कहो से क्वेश्चन को नंबरिंग करियो जदि तुम्हें पर्टिकुलर न हो. तो 10 नंबर क्वेश्चन 9 इथानल प्रेमोस कहले 9 इथानल देखि नबा आंसर कौन हम CH3 CH2 CH2 CHOH थिला इठी तो C डबल बॉन्ड O then CH3. So number of carbon is your 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So it is your pentane 2ONE. The compound will be pentane 2ONE. पे मैंने प्रैक्टिस करने द्वारा एगुड़ाक सब मन रही. सो डू प्रैक्टिस, प्रत्येक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर आराम से. ओके, पेंटेन 2ONE. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. नेक्स्ट आज आम थ्योरी पढ़ा. सो ऑलरेडी आम बहुत सारा टाइम आज पड़ेगा होमवर्क प्रैक्टिस रे. नेक्स्ट टाइम टू किंतु समस्ते होमवर्क करके आसो जद्वारा बहुत इजी हो. ओके, नेक्स्ट आम देखा फ्रॉम अल्किन, दैट इज योर ozonolysis reaction. Okay, 7 number reaction, that is ozonolysis reaction from alkene, which is ozonolysis reaction. This is very important. Alkyne ro exam pai ete important nahi. It is only in important on the view of basically entrance exam. ଆଉ ନହେଲେ से सेक्शनटा एतटा इम्पोर्टाट ना आल्काइन. ठीक अच्छे सर. क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आंसरटा टिके लास्ट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कहि सारछि. लास्ट क्वेश्चन आंसर इज ऑलरेडी गिवन. यू कैन मेक ए बैकवर्ड बैक कर परिवो. सो इट इज योर कौन आसतिला लास्ट क्वेश्चन आंसर आछि. अच्छा देखा जाउ नथिला फेस. राइट नाउ इट इज पेंटेन 2ONE. The question of last question, that is your 10th number question, is pentane 2ONE is the right answer. Pentane 2ONE is the right answer. मत टिके ना pentane 2ONE. Okay, because question टा यही पाखरे लिखा गला आंसर जे जेमती यही गला. Okay, from alkene. How can you prepare from alkene? So there is a reaction that alkenes when added with ozone, alkenes when added to ozone. A question da pila mane particularly important for 2 chapters, that is your aldehyde ketone and carboxylic acid, as well as aldehyde and ketone as well as carboxylic acid. एटा दुईटा चैप्टर पे बहुत इंपोर्टेंट. सो ये क्वेश्चन को भल भाव देख. alkene when added to ozone forms ozonite, give a compound ozonite, gives an intermediate ozonite. पिला माने जो माने भी टाइम नष्ट कर देच रिगार्डिंग ऑर्गेनिक थ्रू आउट योर
1 year you could not appear for prepare well for organic, then here there is a chance that you could prepare well. Alkene when added to ozone gives an intermediate, that is ozonide, which on hydrolysis which on hydrolysis produces aldehyde or ketone respectively. Aldehyde or ketone respectively. ठीक अच्छे, आम गोटे गोटे एग्जांपल नहीं देखा ताले बुझी जीव। सर अल्कोहल फिनोल एंड इथर चैप्टर रो क्लास हबनी कि हब हब प्रतिभा सेगुड़ा भी हम टाइमली। आल्डिहाइड कीटोन सरिले तो सेटा हम। आल्डिहाइड कीटोन सरिबा को टिके टाइम लगे कहीं आल्डिहाइड कीटोन रो बहुत क्वेश्चन आसे बोर्ड रे, से मु आल्डिहाइड कीटोन को बहुत टिट बाय बिट देखुची। अल्कोहल फिनोल इथर रो सेही पर्सन को बेसी देखिबी जो पर्सन गुडाक इंपोर्टेंट ओनली, किंतु आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड रे खास करी आल्डिहाइड कीटोन रो हमें एक्जाक्टली कहि परिबानी व्हिच इज इंपोर्टेंट एंड व्हिच इज नॉट इंपोर्टेंट। सो से आम सब गुड़ा सेक्शन को देखा पड़ो फॉर आल्डिहाइड कीटोन। सो द alkene, that is suppose CH3 single bond CH triple bond CH, sorry this is your alkyne he gala, this is alkene, okay, this is alkene. Alkene when heated with ozone, alkene when heated react with ozone in presence of CCl4, basically you will get the ozonide. केमदी मन रखिबा CH3CH, यार मेकानिज्म अच्छी पिला माने बहुत हायर क्लास रे, जतने मु यार मेकानिज्म पढ़ोनी, बट इन मेकानिज्म इन हायर क्लास मुझे तो बहुत पिलांगर डिमांड भी आसिलानी ग्रेजुएशन लेवल रो स्टार्ट करिया पे क्लास, जो स्टार्ट करी से एक्सप्लेन करी। सो जेतु तुम इंपोर्टेंट नाई, सो देयर विल बी द ओजोनाइड लाइक दिस, ठीक अच्छे। यहाँ तुम ओजोन चैप्टर भी अच्छी केमदी कौन रिएक्शन करिवो। सो ए भलिया ओजोनाइड हम, दिस इज योर ए कंपाउंड नेम हम 2,3, दैट इज योर प्रोप 1 और प्रोपिन, एंड दिस इज प्रोपिन ओजोनाइड, द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी प्रोपिन ओजोनाइड, ओके। ए कंपाउंड नेम हम प्रोपिन ओजोनाइड। जितेबाला आम हाइड्रोलिसिस करवा यूजिंग H2O, सर एग्जाम पर्सन सह सब कॉन्सेप्ट क्लियर हवा पड़ो, राइट। एग्जाम कॉन्सेप्ट को आम बेसी फोकस करवा, किंतु सब कॉन्सेप्ट को क्लियर हेले जाए आम एग्जाम रे बस परिवा, ओके। तो H2O जितेबाला आम दबा हाइड्रोलिसिस जितेबाला आम करवा सब गुड़ा सरीज पिला माने, केवल तुम काम है आज गोटे रिक्वेस्ट जे समस्ते होमवर्क गुड़ाक टाइमली करदेव। होमवर्क गुड़ा जो दिन से दिन जदि करदौच ताहले बहुत जल्दी हो जोटा तुम होमवर्क सेक्शनटा इनिशियली जो रिविजन होची विथिन 15 मिनिट लगे, 15 मिनिट सरीगला, आउ बड़का आम 45 मिनिट्स 45 मिनिट्स आम कवर कर चैप्टर ऊपर फोकस कर, किंतु विदाउट डूइंग होमवर्क विदाउट डूइंग रिविजन आई कैनट गो फर्दर। मो होमवर्क और रिविजन निहाती करने को पड़ो। सो फर्दर H2O पास करने द्वारा यू विल गेट एटी तुम CH3CHO हो, हियर यू विल फाइंड द डबल बॉन्ड। सो दिस कंपाउंड विल बी CH3CHO, दैट इज CH3CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, प्लस ये कौन आसो CHO ओनली, दिस विल बी CH2, सॉरी ये CH2 रही भूल हो जाए, दैट इज CH2O, और वी कैन से दिस इज HCHO, CH2O or HCHO. So this is your, we got here formaldehyde, one product, and another is acetaldehyde as product. ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, ये भाया क्वेश्चन आसे भी, ठीक अच्छे। आम एक्जाक्टली कही परिवानी ये सेक्शन रो खास करी आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड रो को क्वेश्चन आसीबो को क्वेश्चन आसीबोनी। सो यू हैव टू प्रिपेयर इन ए प्रॉपर प्रोपागेंडा फॉर गेटिंग ए गुड रिजल्ट, एंड से तुमको रिक्वेस्ट करछि जे जो मैंने भी रेगुलर आसछ जे कौन करिवो ना, बेसिकली सकाल मॉर्निंग 5टा बेले तो क्लास होची, सब बेले 5टा बोलिक नुह, बेले बेले 5:15 हो जाए, एटा मु मो तरफ मानुची। मु उठिला बेलू अराउंड 5टा हो जाए एक्जाक्टली, बेले बेले 5टा हो जाए, 5टा पूर्वर तो बेले बेले उठी पड़े, किंतु सब बेले 5टा हो जाए, कहीं शोला बेलू बेले बेले मोर राति 12टा 1 भी हो जाए शोला बेले। सो से मुझे अर्ली
ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଯାଏ ଉଠିଲା ବେଳୁ 5ଟା ବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିବି। ଏଇଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହାର ଫାଇଦା ଯେ ତୁମେ ଯେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିବାର ହେଉଛି ମୋର ସେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିବାର ହେଉଛି। ମୋର କେବଳ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ମନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୋର ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଥରେ ଉଠିବାର ଡେଲି ଉଠିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ଖାସ୍ କରି ଏଇଠିକି ଆସିବା ପରେ ମୋର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କମିଗଲା। ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆସିବା ପରେ ସାର୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ରଖିବେ କି ସାର୍? ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପୁଟ୍ ଏ, ସେଇଠି ତୁମେ ବେସିକାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିକିରି ଆଗ ଛାଡ଼, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉଟ୍କୁ କଭର୍ କଲା ପରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ଦେଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ଡାଉଟ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି ତୁମେ ପୋଷ୍ଟ କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ରୁ, ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟ କର, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ରିସିଭ୍ ଇଟ୍। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଟେ ଡାଉଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଏ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ବଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ଦ ଡାଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। So this is CH3, there will be no bond actually, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, there will be no bond, କିଛି ବଣ୍ଡ ରହିବନି। So ultimately you will get the ozonide here, ଏଇଠି ଆମର ozonide ଆସିଯିବ, then this will be O, ozonide. Further H2O pass କରିବା, after passing H2O there will be your shifting, there will be your cleavage of the bond and you will get the compound that is CH3 COCH3 ए लेफ्ट साइड रे तुम्हें मैंने लक्ष्य कर लेफ्ट साइड CH3 COCH3 आसीबो लेफ्ट साइड रू। राइट साइड रू कोन आसीबो? राइट साइड रू you will get, from right side you will get this compound, right side रू आसीबो CH3CHO और CH3COH, CH3CHO और CH3CHO, that is aldehyde, acetaldehyde, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି acetone. So you got here two compounds, acetone as well as acetaldehyde, giving H2O2 as a byproduct, hydrogen peroxide as a byproduct. How hydrogen peroxide is a good oxidizing agent. ठीक ଅଛି, hydrogen peroxide is a good oxidizing agent, but if we compare between ozone and H2O2, ozone is a good oxidizing agent. ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन या को बेस करी सॉल्व करिवा, दैट इज हाँ एठी मु आउ गोटे जिंस दबा को भूल जाई, जिंक डस्ट रहइबो पिला माने, जिंक डस्ट रहइबो। ठीक अछि, व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस जिंक डस्ट रहइबो, जिंक डस्ट रहइबो। सो फर्दर आउ गोटे क्वेश्चन करिवा, CH3 एठी सिमेट्रिकल रहू अनसिमेट्रिकल रहू किछ हमको फरक पड़िबोनी, CH3 देन C2H5 then double bond CH3। या को जेतेबेले आमे ओजोनोलिसिस करिबा, व्हेन यू गो फॉर ओजोनोलिसिस दिस compound in presence of O3 and carbon tetrachloride is the reaction medium, we will get the product like this C then CH CH3 as usual जहाँ जेमती अच्छी आगे लिखिदेली, बॉन्ड किंतु रखिबो नाही, डबल बॉन्ड रखिबो नाही। ठीक अछि, CH3 C2H5, further there will be your ozonide, एटी ozonide आसीबो as usual O, then here you will O, further this will be O. So ozonide which can be splitted further to give H2O, H2O से react करिवा द्वारा you will get H2O2 as a byproduct as well as you will get the product like this। लेफ्ट साइड रू आसीबो तुमरा कोन प्रोडक्ट CH3CO C2H5, राइट साइड रू प्रोडक्ट आसीबो कोन CH3CHO CH3CHO acetaldehyde। okay, so you will get acetaldehyde as well as butane 2ONE, butane 2ONE as product। एटा अलगा कर दूची so that particular जाना पड़ियो, butane 2ONE as a product, okay, plus H2O2 as a byproduct, H2O2 as a byproduct। okay, ठीक अच्छे, कहार किसी डाउट्स अच्छी सेक्शन रे, डू यू हैव एनी डाउट्स?
ପିଲାମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 6 ଜଣ ପିଲା ପଳେଇଲେଣି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ପଢ଼ା ବହୁତ ଜଣ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓକେ, କ'ଣ କରିବା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଏଇଠି ହିଅର୍ ଆଇ କଭର୍ସ ୟୋର୍ ଓଜୋନୋଲିସିସ୍। ହଁ, ଜିଙ୍କ୍, ଏଇଠି ଜିଙ୍କ୍ ଡଷ୍ଟ ରହିବ, H2O ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେବା ଓଜୋନୋଲିସିସ୍ ସରିଲା। ଓଜୋନୋଲିସିସ୍ ଇଜ୍ କଭର୍ଡ ହିଅର୍, କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହିଅର୍। ନେକ୍ସଟ वी विल गो फॉर फ्रॉम ग्रिग्नेंट्स रिएजेंट, दैट इज योर 8th number reaction, that is from Grignard's reagent. Okay, no sir, thank you. From Grignard's reagent, from Grignard's reagent, Grignard reagent ରୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। Grignard's reagent ରୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲଡିହାଇଡ୍ କିଟୋନ୍ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। Grignard reagent କେମିତି Grignard reagent ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ପାଇବା? So basically you can have the reaction that aldehyde when, केवल aldehyde ही କହିପାରିବା, କିଟୋନ୍ ବି ହେଇପାରିବ, नो डाउट କିଟୋନ୍ ହବନି ବୋଲିକି ନାହିଁ। କିଟୋନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବହୁତ ଟଫ୍ ରହିଥାଏ କିଟୋନ୍ର, ସେଥିପାଇଁ କିଟୋନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଲେଖିଦେଉଛି ତଥାପି। aldehyde and ketone can be, aldehyde and ketone can be prepared from alkyl halide, can be prepared from, sorry ଏଇଟା ୱାର୍ଡିଂ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। aldehyde can be prepared from, aldehyde ପ୍ରଥମେ ରଖିବା, aldehyde can be prepared from alkyl halide by reacting with Grignard reagent, by reacting with Grignard's reagent Grignard's reagent followed by hydrolysis. जो मैंने भी भावुच जे यही सेक्शनटा शेयर करवा दरकार, देन प्लीज गो फॉर शेयरिंग इफ यू विश फर्दर, जे अन्य मैंने भी पढ़िया दरकार। aldehyde कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम alkyl halide, alkyl halide मीन्स R X और यू कैन से R, भूल हो गला सॉरी, alkyl halide हबनी, सॉरी पिले मैंने। aldehyde can be prepared, sorry again, can be prepared from Grignard's reagent by reacting with HCN followed by hydrolysis। गोटे मिनिट रुह, तुमको वार्डिंग काटा पड़ोनी, मुझे लिखी दूँ। aldehyde can be prepared from Grignard's reagent। प्लान प्लीज डोंट प्रेज मी, मत भल लगे कहीं प्रेज कले, प्लीज। समटाइम प्रेज गिव एप्रिसिएशन बट समटाइम प्रेज इज नॉट रिक्वायर्ड। aldehyde can be prepared from Grignard's reagent by treating with HCN, that is your हाइड्रोजन सियानाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एटा को टिके करेक्शन कर दियो, बहुत खराब लगुच जे तुमको इनिशियली गोटे भूल कहीदेली, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सॉरी फॉर दिस। ताले इठी तुमरो कोन हम रिएक्शन, रिएक्शन हबो तुमरो RMgx will be react with HCN SC ट्रिपल बॉन्ड N। तो SC ट्रिपल बॉन्ड N रे तुम्हें देख C आउ N भितर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम कोटा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम? Which one is more electronegative atom? Nitrogen. That's why this
bond will shift towards nitrogen, गोटे bond cleavage ହେଇକି nitrogen ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବ। फर्दर R ଆଉ mg माने R माने सिंपली कार्बन थाए पिला माने R माने हाइड्रोजन न थाए, R माने कार्बन थाए। गुड मॉर्निंग बसंत, गुड मॉर्निंग शुभम, वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। R माने कार्बन थाए, सो कार्बन और मैग्नीशियम भितरे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन रो थाए, से ये तुम कौन हम R माइनस आउ mgx प्लस हम, ठीक अच्छे। R डेल्टा माइनस mgx डेल्टा प्लस, देर विल बी ए पार्शियल polarization or partial charge separation in between R mgx, because R is your carbon. Between carbon and magnesium, carbon has higher electronegativity and magnesium has lower, that's why R will react here. Further R एठी react करिया द्वारा एठी तुम्हारा further कौन हम R react करिया द्वारा तुम्हारा mgx नाइट्रोजन सहित अटैच हम, तो ये माइनस चार्ज डेभलप हम, ये प्लस चार्ज डेभलप हम। सो फर्दर माइनस को प्लस अटैक करदेव एज यूजुअल, किंतु HCN जेमती सेमती रहिबो, बिकॉज SCN रे तुमरो क्लीवेजटा कंप्लीट हेनी, किंतु RMGX रे क्लीवेज कंप्लीट हम, से SCN को जेमती सेमती रखिबो। N माने N रे MGX रहिबो, फर्दर कार्बन रे तुमरो R रहिबो, ओके। फर्दर ताकू जेतबेले हमें हाइड्रोलिसिस करिबा, व्हेन यू गो फॉर हाइड्रोलिसिस, when we go for hydrolyzing this, you will get particularly एठी हाइड्रोलाइज कले एभलिया मन रखिबो जे N एठी OH रहिबो, एठी H रहिबो, फर्दर एठी H2 रहिबो, एठी O रहिबो, ओके। एभलिया पैटर्न रे मन रखिबो स्प्लिटिंग रा। एक्चुअली इट इज नॉट द मेकानिज्म, बट दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर। सो फर्दर आसीबो R C डबल बॉन्ड OH RCHO प्लस NH3 plus MgOHX plus MgOHX, okay, plus MgOXX, that is magnesium hydroxyl halide। तो यार गोटे दीटा एग्जांपल आम करदबा। आर जगह आम जदि नबा CH3 MgCl, मिथाइल मैग्नेशियम क्लोराइड और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड बेटर हम, ग्रिग्नेट रिएजेंट ब्रोमाइड केस रे बहुत भल हुए। CH3 MgBr प्लस SCN रिएक्ट फर्दर करिकी तुमरो कौन आसीबो कंपाउंड, यू हैव टू टेल कौन आसीबो प्रोडक्ट एठी, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर। CH3 MgBr प्लस SCN रिएक्ट करिवा द्वारा कौन आसीबो प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर। सर ठीक है लास्ट स्लाइड, ओके श्योर। RCHO प्लस NH3 प्लस MgOHX कौन आसीबो जेतबेले तुमरो, आई थिंक एटा समस्त लिखि देथिबो, एटा लिखिकी वर्तमान को कौन आसीबो प्रोडक्ट। जोटी भी जो जिनसा मिस हो जाउछि ना, टिके बेक कर दबो ताहले तुमरो ऑटोमेटिक हो जिवो, जस्ट एसीटोन। वेरी गुड बसंत, आंसर देखिबा, आंसर कौन आछि देखिबा, आंसर ठीक अछि कि नहीं, एटा तुम मान तुम भी बहुत इंपोर्टेंट बसंत, ठीक अच्छे। अवश्य जाम लेवल रे एभलिया एते सहज क्वेश्चन आसेनी, नो डाउट। CH3 C सॉरी एटी SCN हम, भूल हो गला, SCN विल बी देयर। एसीटोन बसंत हैज टोल्ड, एसीटोन SC डबल बॉन्ड N, then N MgBr। बसंत how your preparation is going for jam, sorry jam has been already sorry helani, how is for CPET, next CPET रहिबो एग्जाम, how it is going further एटी तुम्हारा ब्रेकेज हवा, स्प्लिटिंग हवा, there will be H2O HOH, so further you will get CH3CHO acetaldehyde plus ammonia plus magnesium hydroxyl bromide, so answer is wrong Basant, answer will be your acetaldehyde, not acetone, okay। So this is your methyl magnesium bromide, गुड मॉर्निंग परशुराम, नमस्कार भी। तुम्हें तो कोचिंग को माने प्राइवेट क्लास को तो आसुना, आमर जोटा होची स्टिल कम टू द क्लास रेगुलरली टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मिथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड, देन दिस इज नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 5th सेमेस्टर, ओके। दिस इज HCN, that is hydrogen cyanide,
and this will produce acetaldehyde plus ammonia plus magnesium hydroxyl bromide। मते काली जने स्टूडेंट पचार सर आपण एते जल्दी एते सकाळ उठिकी कौन आपण क्लास नौचन सबले कहली कारण मु उठिले पिला माने उठिबे तो मु उठिबा चक्कर किछि पिला उठी परिबे किछि पिला मॉर्निंग उठिबार अभ्यास हो समस्त को जो मैंने भी +2 से रिक्वेस्ट प्लीज मॉर्निंग उठ मॉर्निंग रे उठिकी पढ़िबार जो चार्म जदि तुमको निद लगुच देन गो फॉर वाटर पानी पियो सल्वेटेड हुआ बॉडी को बहुत सल्वेटेड कर इट विल गिव यू मच मोर एनर्जी एंड डेफिनेटली देखिबा तुम्हें मॉर्निंग रे जो मैंने भी उठिबार अभ्यास नथिबो हैबिट नहीं जीवो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आछी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट सर एटा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की यस यस अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड थंबनेल रे अछि ऑलरेडी सो CH3 नेक्स्ट मोर सर स्टार्ट हबो ओके आ पूर्वर वीडियो अपलोड होइछि कि आ पूर्वर 3 दिन क्लास होइछि ठीक अच्छे। नेक्स्ट हम देखिबा C2H5 MgBr प्लस HCN एडी कौन आसीबो प्रोडक्ट कह दियो व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर या पूर्वर आउरी 3टा वीडियो अपलोड हो सारी परसु से 3टा वीडियो भी देखी दियो जो तुम कॉन्सेप्ट क्लियर नाही जदि कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तार लास्ट पार्ट को केवल देखी दियो होमवर्क गुड़ाक जहाँद्वारा तुम प्रैक्टिस करिवार हेल्पफुल हम। थैंक्स फॉर सजेशन ओके बसंत थैंक यू पर्टिकुलरली जो माने भी अच्छे जो माने भी ऑलरेडी पढ़ी सारी पाठ गुड़ाक से माने डिटेल्स पुणी जावा दरकार नहीं जस्ट गो फॉर द लास्ट वीडियोर 3 ରୁ 4 मिनिट जाओ आउ ए वीडियोर स्टार्टिंग वीडियोर 5 ରୁ 10 मिनिट जाओ लास्ट वीडियो रे तुम्हें होमवर्क पाई आउ वीडियोर प्रथम वीडियोर फास्ट 15 मिनिट रे तुम्हें आंसर पाई से होमवर्क लवकुश कही सारे प्रोपानाल्डिहाइड वेरी गुड लवकुश मु डायरेक्ट ये आंसर कही दूची C2H5 ये तुम CHO C2H5 CHO प्लस NH3 प्लस MgOH मैग्नेशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड डायरेक्ट पिला माने मु करदेली एठू जस्ट एटा तुमरा +2 क्लास सो यू मे नॉट गो फर्दर दिस ठीक है एटा जेहेतु +2 क्लास रही प्रोपानाल वेरी गुड यू मे नॉट गो फर्दर माने तुम्हें पढ़ी न पार भी कहीं एगुड़ाक तुम भी इम्पोर्टेंट बिकज अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर भी थिला तुमर 3rd सेमिस्टर रे जो मैंने 3rd सेमिस्टर से भी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर गुड़ाक फर्दर प्रैक्टिस भी हो पिला भल मन पकड़ 3rd सेमिस्टर पिला कहवा एग्जाम से आगू को अच्छी सो आई विल रिमाइंड देम। नेक्स्ट कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड नेक्स्ट जीवा कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम Grignard's reagent by reacting with एटा 2टा चैप्टर को भी कवर करिवो रिएक्टिंग विथ अल्काइल नाइट्राइल अल्काइल नाइट्राइल सहित जदि आम ग्रिग्नाइट रिएजेंट को रिएक्ट करवा आम भी अल्डिहाइड पाइबा व्हाट इज द रिएक्शन बिहाइंड दिस RMgX प्लस अल्काइल नाइट्राइल माने तुमर एठी HCN रहिबनी फॉर्माल्डिहाइड हाइड्रोजन सियानाइड रहिबनी रेदर यू विल फाइंड द थिंग दैट इज योर R-CN ओके CN C triple bond N हबो R-C triple bond N it has the same mechanism as we have seen यार भी mechanism same आसीबो बेसिकली आम सॉल्वेंट ड्राई इथर दे परिबा इवन एसीटोन भी दे परिबा which will provide a neutral solvent for this reaction further react कला परे कौन आसीबो आज आउ टिके अधिक समय पढ़देवा जेहेतु आज मोर भी किसी क्लास नाही
फर्दर तुम मान भी क्लास किसी नथिबो जदि कार क्लास थिबो कह आज जस्ट एटा सरदवा तापर नेक्स्ट क्लास रे एरोमेटिक आल्डिहाइड रो माने पर्टिकुलर नेम रिएक्शन जीवा तापर सरला परे नेक्स्ट तुमर प्रॉपर्टी गुडा जीवा सो याकू जिते रिएक्ट करवा it this will give rise to r minus, this will be r delta plus, and here the polarization will cause polarization will cause minus charge, here you will find plus charge. Further polarization gote bond polarize hejibo and ultimately you will get r dash c n, r dash c double bond n, r dash c. आज इलेक्शन अच्छी सो आम कॉलेज छुट्टी अच्छी सर आमर भी कॉलेज आज छुट्टी अच्छी c double bond n, then further r mgx, r will attach it here and mgx will attach it here, mgx. Okay, then it will undergo hydrolysis. Okay, it will undergo hydrolysis. Further hydrolysis हवा द्वारा सेम प्रोसेस रे तुम्हारा क्लीवेज हवा, इट इज सेम सिमिलर प्रोसेस बट रिमेंबर द हाइड्रोलिसिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस. रिमेंबर ये एसिड हाइड्रोलिसिस हवा जद्वारा बेसिकली जो कार्बन नाइट्रोजन को बॉन्ड भांगार अच्छे एसिड हाइड्रोलिसिस. सो दिस विल ओ H2 फर्दर H OH. सो यू विल गेट R dash COR by RCOR dash COR plus ammonia plus magnesium hydroxyl bromide plus magnesium hydroxyl halide, magnesium hydroxyl halide you will get. Okay, so further next आम देखा ये आम जदि फर्दर देखा गोटे एग्जांपल नहीं जावा आम CH3 MgBr will react with CH3 MgBr will react with CH3CN to produce which compound? CH3CN followed by hydrolysis will produce, followed by acid hydrolysis will produce which compound? एटी तुम एडिशन प्रोडक्ट आसो तापर कौन आसो प्रोडक्ट फर्दर CH3C डबल बॉन्ड N, एटी तुम CH3 लगे, एटी तुम MgX लगे. ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन. देन व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? एसीटोन. वेरी गुड. लवकुश, गुड आंसर. एसीटोन, लवकुश हैज गिवन द राइट आंसर. सो ताको आमे हाइड्रोलिसिस करवा. whenever you go for hydrolysis then there will be splitting like this OH2 HOH. So further you will get CH3 COCH3 that is acetone as well as magnesium hydroxyl bromide, it bromide thila na, plus MgOH Br magnesium hydroxyl bromide plus ammonia. Okay, next क्वेश्चन एग्जांपल दबा एथरा आउ दुईटा एग्जांपल दे दबा. CH3 MgBr will react with C2H5CN to produce. वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड श्रावणी, बहुत बढ़िया आंसर दीच. ड्राई इथर to in CH3 MgBr will react with C2H5CN in presence of dry ether to produce a compound that is CH3 C bond CH3 double bond N MgBr. Okay, here it will be C2H5. then what is the product here? It is product कौन आसीबो particularly? After hydrolysis what is the product here? Please जो मैंने भी क्लास को आसो, जो मैंने भी नुआ अच्छा, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल. आई थिंक मैक्सिमम जो मैंने मोर बहुत चिन्हा परिचय से ही मुझे कहनी सब्सक्राइब करने, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू बिकज सो दैट बहुत पिला यहाँ जानीपर जो मैंने भी पढ़ार वंचित हो पार्टी पढ़ी पारना ड्यू टू सम एनी इश्यू, फिजिकल इश्यू हो पारे, जेकोसी इश्यू पढ़ी पार नो से पढ़ी पारे. CH3COC2H5 ओके प्लस
MgOH plus ammonia. So the product will be ethyl methyl ketone. Very good. Lavkush answer ठीक देइचंदी. Ethyl methyl ketone बा butane 2ONE will be the product. Next मो राइट साइड रे प्रोडक्ट लिखुची, लेफ्ट साइड रे कौन हम मत कह. ठीक अच्छे. क्या सहित रिएक्ट कले मो प्रोडक्ट पाइबी C2H5 CO C2H5 C2H5 CO C2H5. तो या आम प्लस MgOH मैग्नेशियम CO C2H5 कौन है C2H5 CO C2H5 that is your pentane 2ON 3ON pentane 3ON मुझे नहीं जाऊँगी जेतो ये लिखिदेली C2H5 CO C2H5 pentane 3ON. नो बोधे स्टॉप हो गला. I'm erasing this. So pentane 3ON केमती आसो. How can you get pentane 3ON? पेंटेन 3ON क्या सहित ट्रीटमेंट करने द्वारा पाइब. सो से तुमको बैक जावाक पड़ो. रिएक्शन रो बैक साइड को जावाक पड़ो. पेंटेन 3ON दैट इज C2H5 CO C2H5 पेंटेन 3ON प्लस MgOH मैग्नेशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड प्लस एमोनिया. तो क्या रिएक्ट कले आम ये सब जिनस पाइबा. क्या इनिशियली क्या नेले आम एगुड़ा सब पाइबा. So what should be the initial reactant for to get pentane 3ON as a product? To get pentane 3ON as a product, we should react. It should be reacted with which part? Pentane 3ON पाइबा को हमें क्या सहित रिएक्ट करवा दरकार. क्या सहित रिएक्ट करवा दरकार. स्टार्टिंग मटेरियल कौन हम. व्हाट विल बी द स्टार्टिंग मटेरियल. C2H5 COCH3 प्लस NH3 प्लस MgBr. अच्छा वेरी गुड. श्रावणी सेकेंड क्वेश्चन आंसर देले बोधे. किंतु थर्ड क्वेश्चन आंसर कौन हम. C2H5 CO C2H5 प्लस MgOH प्लस एमोनिया. दिस विल बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हिच टू पार्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर. तो मु गोटे गोटे करी करी जाउची. सो यू विल गेट C2H5 C डबल बॉन्ड N रहिबो. देन एठी तुमरो C2H5 रहिबो जेहेतु एटा तुमरो कीटोन दे दोची. फर्दर एठी MgBr रहिबो. राइट. सो फर्दर या को ड्राई इथर देले तुमरो बैक साइड जदि जिबा ड्राई इथर. पिला माने रिएक्शन फ्रंट रिएक्शन केवल प्रैक्टिस कला माने बैक साइड भी रिएक्ट प्रैक्टिस करबा दरकार. कारण रिएक्शन बैक को जदि न जाए कि प्रैक्टिस करछो देन आल्सो यू माइट लूज. ठीक अच्छे. C2H5 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N दैट इज इथाइल नाइट्राइल प्लस ये आसीगला आंसर. लवकुश कही सारे C2H5 CN C2H5 MgBr. वेरी गुड लवकुश. दी भाई जोर जबरदस्त पढ़ी चलते. C2H5 MgBr. Okay, so this is ethyl magnesium bromide and this is your propyl nitrile or you can say propyl nitrile by ethyl cyanide. Ethyl cyanide or propyl nitrile. Very good Shubham, very good. श्रावणी भी आंसर कही सारे. फर्दर दिस विल बी इथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड. तुम जो सांग मैंने भी ऑलरेडी ये कोर्सटा कवर कर सारी से भी तुम्हें जस्ट कही दियो जे सार कहते क्लास रो लास्ट वीडियो आउ क्लास रो स्टार्टिंग वीडियो देखीदे जथेष. क्लास रो लास्ट वीडियो रे होमवर्क थाए. फास्ट वीडियो रे होमवर्क रो सॉल्यूशन थाए. सो से देखीदे भी जथेष फॉर ए रिविजन. जो मैंने भी पढ़ी सारी चैप्टर गुड़ा पढ़ी सारी. कारण चैप्टर पढ़ा द्वारा टाइम भी पलैब ना जो मैंने 2022 प्रिपेयर होती. बट स्टिल जदि इट विल मेक यू ए प्रिपरेशन ऑल्सो. जो मैंने भी कॉन्सेप्ट माने स्ट्रॉन्ग ना ये
So next it is propyl nitrile. This is propyl nitrile or ethyl cyanide. This is your methyl cyanide or ethyl nitrile याको कुहाଯିବ, and this is methyl magnesium bromide. Methyl magnesium bromide. बहुत छोट छोट अक्षर लिखुଛି ओ ठीक अछि मिथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड ओके नेक्स्ट जिबा होमवर्क फॉर टुडे आजिर होमवर्क आजिर डेट केते आजिर डेट होची 24/3/2022 रो होमवर्क समस्त ए भलिया लिखि दियो क्लास रो होमवर्क गुडा को एजुअल लिखि दियो मोडा डेट पकोनी काहे ना एडमाइट डेट पकेला असुविधा छाड़ होमवर्क जदि हम देखिबा ए सेक्शन रो होमवर्क सो द क्वेश्चन इज फर्स्ट CH3 CN plus C3H7 MgBr in presence of dry ether and H3O plus acid hydrolysis will produce. Then which compound will give rise to two compounds will produce acetaldehyde CH3CHO plus NH3 plus MgOHBr magnesium hydroxyl bromide. So what is the what is the initial reactant in this case? Further, again I am treating dry ether, then H plus water rahibo. Further there will be C2H5 COCH3 plus ammonia plus MgOHBr. What are the reactants? पे जो क्वेश्चन गुड़ाक ना तुम्हें प्रैक्टिस करदे ऑटोमेटिक देखिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो बहुत सारा माइंड भी सेटअप हो सो डू प्रैक्टिस फॉर दिस CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3 plus O3 in presence of zinc dust followed by hydrolysis will give rise to which product? नेक्स्ट जो मैंने भी लिखि पारन तो लिखिदेव ठीक अच्छे टी बैक जाके लिखिदियो जिंक सॉरी एटा एभलिया रखिबा ड्राई इथर करिया द्वारा इट विल फर्दर हियर zinc followed by H2O will lead to formation of acetaldehyde plus acetone. What are the reactants here? कारण पिलाने बैकवर्ड रिएक्शन करवा निहाती दरकार अदरवाइज तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हम ना बा प्रैक्टिस हेनी सो रिएक्शन रो बैकवर्ड पार्ट माने रिएक्टेंट कौन हम सेगुड़ा भी प्रैक्टिस करवा निहाती दरकार नेक्स्ट क्या ट्रीटमेंट कले ओजोन ड्राई इथर in presence of zinc dust followed by hydrolysis you will get CH3CO C2H5 plus HCHO formaldehyde. Okay, 7 number question is benzoyl chloride upon reacting with which compound will produce benzaldehyde. Next, which upon dry distillation will produce CH3CO CH3 plus CaCO3. Two molecules, both of them are two molecules. Next question number 9, that is your
ओजोन लेयर सरला which upon reacting with CdCH3 whole twice and dry ether will produce CH3COCH3 plus CdCl2. Which compound? ठीक अच्छे क्वेश्चन गुड़ा लिखिदि आग पर सॉल्व करियो आग क्वेश्चन गुड़ा लिखिदि तापर पर सॉल्व करियो जो मैंने भी सॉल्व करिया को इंटरेस्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन further that which upon carbon then this is your 300 degree Celsius give rise to CH3 CHO plus H2 डिहाइड्रोजनेशन कले क्या डिहाइड्रोजनेशन कले एसिटाल्डिहाइड आसो फर्दर CH3 CHOH C3H7 को डिहाइड्रोजनेशन कले कौन हम प्रोडक्ट नेक्स्ट then your CH3 CH2OH will produce CH3 CHO plus H2O. What is the reagent here? Reagent एटी कौन रहिबो? What is the reagent here? ठीक है, what is the reagent? 13 number question. Is your yes CH triple bond C CH3 upon reacting with HgSO4 then dilute H2SO4 will produce which compound? 14th number, which is the last question of this section, last question, homework question of this section, that is your CH3 COCl upon reacting with H2 in presence of palladium barium sulfate over hot xylene will produce which compound? तो ये क्वेश्चन गुड़ाक समस्ते कर देखिए अल्टीमेटली यू विल गेट ए गुड रिजल्ट ए क्वेश्चन गुड़ा समस्ते कले प्रैक्टिस बहुत हम भल हम प्रैक्टिस डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड रिजल्ट ऑल्सो कारण ऑर्गेनिक रे जो आमर डर रही जाए ऑर्गेनिक पिला माने डेली किंतु हाफ एन आवर रु 1 आवर दबा पड़े अदरवाइज यू कैन नॉट गेट ए गुड मार्क इन ऑर्गेनिक कारण ऑर्गेनिक रे पर्टिकुलरली मार्क आने एते इजी नुह इफ यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिस but if you have a proper propaganda proper way of practice then you will definitely win. Okay, thank you all for joining the class. Thank you again. आज बहुत समय 1.5 घंटा क्लास करदेली 1.5 घंटा पाखापाखि जेहेतु आज मोर छुट्टी थिला तुम मान भी छुट्टी अच्छी सो 1.5 घंटा पाखापाखि क्लास होगला समस्ते ये क्वेश्चन गुड़ाक होमवर्क गुड़ाक कर आशा करछि. थैंक यू अगेन. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू श्रावण. ओके काली के टाइम हम कि समस्ते होमवर्क करके आसथिबो. ओके थैंक यू.